features say secured online transaction, flexible installment plans, unmatched deals, और 20 लाख तक की credit limit. Silk Bank credit card for a million reasons. For more details, call 021 111 100 333. Terms and conditions apply. So the power play number one is over. The umpire has just signaled that we are now into the second power play, which means that four fielders can be outside the 30-yard circle. The rest have to be inside. No more than four fielders outside the 30-yard circle. Here is Feluguayo and bowls, and this one is strikes him on the pad. There is an appeal, a very confident appeal for LBW. It's disallowed by the umpire, and let us see whether they go for a DRS or not. I think they have. They have referred it to the third umpire, and Feluguayo was very confident. Duplessis consulted the wicketkeeper because that is usually the case. The wicketkeeper is in the best position to find out, and first they are going to check the no ball. He's all right. Kumar Dharmasena is the third umpire, so it's quite all right. No problems there. And the original decision was not out. The ball is pitched. Did he get an edge or not? I don't think he got an edge. That ball, there was plenty of daylight between the inside edge and the ball, and ultra edge is being used now, and I think that is what ultra edge is also showing, that the ball went past the inside edge, and he got it on above the knee. It pitched all right. It was impact was in line, and the wicket is umpire's call, which was not out, and as such it will stay not out, although the review will be retained. Yes, the happiest review I think for everybody, क्योंकि रिव्यू वापस रह गया है. जोएल विल्सन का फैसला भी गलत साबित नहीं हुआ, जबकि साउथ अफ्रीका जिन्होंने अमल किया इसको रिव्यू के तौर पर लेने का, उनके एंड पे भी ये चीज महसूस रही है. लेकिन स्टिल ये बंदा जरूर था, जो कि शकीब उल हसन जो कि अभी क्रीज पर आए हैं, उनकी विकेट अगर राइट अवे हासिल हो जाती तो एक बहुत बड़ा ब्लो पहुंचता बांग्लादेश को. एंड आई थिंक इन फेयरनेस बांग्लादेश का बड़ा जबरदस्त आगाज है, जो कि उन्होंने 60 रन का हासिल किया है पहली विकेट की शिराकत के लिए, और साउथ अफ्रीका 10 ओवर्स के बाद स्लाइटली अपने आप को बैकवर्ड पे समझेगा. राउंड द विकेट गेंद फेंकने के लिए ऑप्शन पे बाहर गेंद, एक सॉलिड एज वहां पर फील्डर मौजूद है, अपने दाएं जाने पहुंचेंगे इसको हासिल करने के लिए. रंगीन अगीजी 1 रन का मजीद इजाफा हो पाया. शोभा सरकार के पास स्ट्राइक 67 for 1 बांग्लादेश. शोभा सरकार surviving that LBW DRS. And Shakib Al Hasan is not out 5 now after that single. In fact, the two batsmen, while the appeal was being made and referred to the DRS, did run a leg by. And as I told you, there was no edge. It's now going to be Feluguayo. He comes in and goes to Shomya Sarkar. That's a lovely shot. He timed it so well. One step forward, timed it right in the middle of the bat, wide of the bowler, down towards the long off boundary, and that's 4 more runs to Sarkar. टोटल कंट्रोल में शॉट को खेलते हुए अपिश ड्राइव उन्होंने खेला, लेकिन डुप्लेसी जो कि उनके बिल्कुल सामने मौजूद थे, शॉट एक्स से कवर की पोजीशन पे उनको अबूर करने में कामयाब रहे, और उसके बाद इस पोजीशन पे कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी. फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई फेलुगुआयो के लिए पहली गेंद पर उनको लेग बैक रन और रिव्यू उनका कामयाब नहीं हो सका, और उसके बाद चौका कंसीड किया है. शोभा सरकार शानदार इनिंग्स खेलते हुए 25 गेंद पर अब तक 40 रन की. राउंड द विकेट शॉट डिलीवरी जिसको पुल करने के लिए राउंड द लेग्स, लेकिन ऑलमोस्ट खतरनाक अंदाज से खेले थे. गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे के पास से होती पहुंचे विकेट कीपर के पास. अंपायर जोएल विल्सन का इशारा 1 for the over. All happening in the over. Those of you who may be interested, and questions have been asked, that Quinton de Kock wears his pads inside the trousers. I mean, the wicketkeeper can be without pads, he can be without gloves, but of course not without trousers, I can tell you that. So here is Feluguayo and bowls. This time Shomya Sarkar goes on to the back foot, cuts it down to Rabada, who runs round, picks it up, throws it in, and the batsman settle for a single. Shakib Al Hasan is 5. Shomya Sarkar is not out 41, and Bangladesh are 72 for the loss of Tamim Iqbal's wicket. इस बड़ा कीन और एंटिसिपेशन वाला क्राउड मौजूद है, खास तौर पर बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, जिसको अब तक एक बड़ा अच्छा आगाज हासिल हुआ है. यूज पिच है जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, और अब तक करीब रिसीविंग एंड और एक और वाइड हो जाएगी.
Venezuela जो कि राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को गेंद करने के लिए आए और गेंद को विद इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स लाना चाहते थे, लेकिन अपनी लाइन में वो गलती कर गए और यूं गेंद पहुंची है क्विंटन डिकॉक के पास और एक मरतबा फिर इस ओवर में हासिल बिजी नजर आने वाले जिल विल्सन ने वाइड का इशारा दिया। तो अब तक सिर्फ तमीम इकबाल आउट हुए 16 बना। In the first power play, Bangladesh scored 65 for 1, which is a fairly decent total. And Shakib Al Hasan and Tamim Iqbal and Sumia Sarkar were in full control. There was a few edges here and there. As in comes Farouk Wile and goes to Shakib. Shakib comes forward, plays it out onto the offside where it is picked up. That also is the end of the over. 11 bowled, it's 73 for 1. यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस, जिससे शेयरिंग, डाउनलोडिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, शॉपिंग, ट्वीटिंग और साथ ही बहुत कुछ चले नॉन स्टॉप पूरा हफ्ता सिर्फ 175 रुपए के लोड पे। तो अभी *260# डायल करो और रहो हर वक्त ऑनलाइन। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। शायद लागू है। मज़ीद मालूमात के लिए www.ufone.com विजिट करें। अपने मोबाइल फोन से टैब लेकर 8000 पर SMS करें और 10 रुपए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अमीर भाषा मोहम्मद फंड पे क्या करें, क्योंकि लेज है हमारा फेवरेट। ये लाया है हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा। अब मिले 15% एक्स्ट्रा 50 और 100 रुपए के पैक्स पे। सो शेयर मोर दिस क्रिकेट सीजन बिकॉज लाइफ नीड्स फ्लेवर। उसके बाद अब तक मैन ऑफ द मोमेंट है शुभमन सरकार, जिन्होंने 27 गेंदों पर 41 रन की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रखी है। तमीम इकबाल आउट होने वाले बैट्समैन जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे और वो ऑलरेडी अपने इस मजे का हाथ में कर गए, जबकि क्रिस मॉरिस अब आ रहे हैं गेंद करने के लिए। क्रिस मॉरिस राउंड द विकेट गेंद फेंकने के लिए इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलते हुए स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, जिसको एयरबॉर्न होकर पुश किया कवर की जाने। फील्डर वहां पर मौजूद थे, रन बनाने का मौका नहीं। 73 for 1. Chris Morris has come in place of Dwayne Pretorius and 35 wickets for him in 35 matches, an average of 40.43. I mean, he isn't the most frightening of bowlers, I can tell you that. And but a very good batsman as well. In the middle order, hard hitting and a very fine fielder. Chris Morris going back to the top of his mark. There's some movement going on towards the side screen, and Paul Rifle had gone towards the side screen. He's now, in comes Morris and both. This time it's tucked away by Soumya Sarkar down towards deep backward square leg, where it is picked up by Miller, who comes running round from a finer, deeper position. The batsman settled for 1. Sarkar goes to 42. Shakib is 5. Yes, Chris Morris जो कि गेंद करने के लिए आए हैं। चौथे बॉलर आजमाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की जानिब से। इससे पहले नगीरी ने 4 ओवर में 34 रन दिए हैं। कागिसो रबादा ने 5 ओवर में 28 रन दिए, जबकि पेरेकोवायो ने 2 ओवर में 7 रन दिए। तो रबादा को रिप्लेस किया क्रिस मॉरिस ने, जो कि एडेड सीमर के तौर पर मौजूद है। राउंड द विकेट गेंद फेंकने के लिए डाउन द लेग साइड गेंद, जिसको निकाला फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर की जानिब शकीब अल हसन ने अपना 6वां रन हासिल किया और बांग्लादेश पहुंचा 75 तक एक खिलाड़ी के नुकसान। One thing is absolutely clear here, that there is nothing in this track for the bowlers. They are not getting any help, the seamers particularly. We haven't seen any spinners yet. Imran Tahir must be saying, come on, let me have a go, let me have a try. And if the batsmen are not going to make any mistakes and they're going to play their shots, I'm sure we are looking at somewhere well over 300. This one is in the air, and is he going to be out? Paul Rifle is going to the square leg umpire because Soumya Sarkar tried to play that ball onto the onside. He tried to pull it, and I think he got an edge. The ball ballooned up in the air behind the stumps, and Quinton de Kock came running in. Well-judged catch, and that should be the second wicket. Yes, definitely he got it off the glove, and the ball ballooned in the air, and very good diving catch by Quinton de Kock. Well done, young man. Morris is absolutely delighted. He's got a wicket, and Bangladesh have now lost Soumya Sarkar to Paul de Kock, Paul Morris, and it's 75 for 2 in the 12th over. आपकी इसी कमाई को दुनिया भर से हम पहुंचा रहे हैं। 600 ब्रांचेस में आपके प्यारों तक बैंक फनम कफे फॉरवर्ड। I take a shower, I take a shower, I take a shower.
इस पुलकर और से तरफ 170 रुपए में 1 जीबी में जीतो गारंटी 1 जीबी मोर और 66 मिलाओ और छक्के पे छक्का लगाओ। Tropicana, goodness of best fruits, now in Pakistan. Silk Bank credit card for a million reasons. बड़ी विकेट हासिल की क्रिस मॉरिस ने आते अपने पहले ओवर में एक और शॉर्ट बॉल अटेम्प्ट की जो कि उनकी दूसरी शॉर्ट बॉल थी। इस मरतबा इसको पुल करने के लिए गए लेकिन वो एच कर बैठे और क्लब से होती हुई गेंद पीछे के स्टंप्स के और क्या शानदार कैच लिया क्विंटन डी कॉक ने। गेंद पर अपनी नजरों को जमाए रखा और इसी प्रोसेस में उन्होंने डाइव लगाई जो कि गेंद उनके आगे गिर रही थी। कुछ कम से कम 6 कदम भागते हुए आए और मुकम्मल फुल लेंथ डाइव लगाकर उन्होंने इस कैच को मुमकिन बनाया जो कि यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बड़ा ब्लो। सेट बैट्समैन और अब तक उन्होंने बल्क ऑफ स्कोरिंग की थी ना सिर्फ बल्कि बड़े खतरनाक इंटेंट में दिखाई दे रहे थे लेकिन किसी हद तक अपना किरदार जरूर अदा करके गए। 30 गेंदों पर 42 रन बनाए। शमा सरकार ने 9 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल रहे जबकि शकीब अल हसन को ज्वाइन करने के लिए अब इनके लिए पहुंच रहे हैं एक्सपीरियंस मुशफिकुर रहीम ओवर द विकेट। गेंद फेंकने के लिए क्रिस मॉरिस कामयाब बॉलर। एक और राइजिंग डिलीवरी जिसको पुश किया कवर सी जानिब। रन बनाने का मौका नहीं। 75 for 2 दो नए खिलाड़ी क्रीज पे मौजूद हैं। Very fine batsman Mushfiqur Rahim. He's also captained Bangladesh. Brilliant catch by Quinton de Kock to get rid of the menacing Sarkar. And Mushfiqur Rahim, of course, as I told you, is a wicket-keeper, batsman, also a former captain, very fine player. And he must be one of the shortest players in the circuit today. I'm not quite sure whether he's the shortest, but he is about competing for that title. He must be about 5'2" tall and probably 3, just if I am being polite. But he is short, very short. इस दौरान जो साइड स्क्रीन में मूवमेंट जारी थी बॉक्स ऑल एंड से गेंद हो रही है जिस तरफ बड़ा वाला स्टैंड मौजूद है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसपे एक आर्क बनता है और उसके अंदर आई थिंक ये 4 तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड्स मौजूद हैं। एक बड़ा और उसके ऊपर मौजूद 3 मजीद स्टैंड्स लेकिन इसके मेन जो सेंटर है उसमें मौजूद साइड स्क्रीन पर से पहले ब्लू सॉक्स कोर्ट वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे वो तो हट चुके हैं लेकिन मजीद कुछ मूवमेंट That has been causing some problems to the umpire, not to the batsman. So that's why Paul Rifle runs all the way. Good exercise for him. In comes Morris now and goes to Mushfiqur Rahim. Mushfiqur Rahim lays back, cuts well, rises to his full 5'2" height, and he's in the air. He's airborne as he cut that ball, and it goes away, racing to the boundary at deep point. 4 more runs to Bangladesh, and Mushfiq off the mark with 4. बैंक अलफला की किसी भी करंट अकाउंट के साथ मिले 600 से ज्यादा ब्रांचेस का वसीम नेटवर्क, हर कोने पर ATM, 24 आवर्स ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, अल्फा, ऑर्बिट्स और ढेरों फायदे। कौन है सुस्त? तुम। बैंक अलफला, द वे फॉरवर्ड। क्योंकि लेज है हमारा फेवरेट, ये लाया है हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा। अब मिले 15% एक्स्ट्रा 50 और 100 रुपए के पैक्स पे। So share more this cricket season because life needs play. Tropicana, goodness of best fruits, now in Pakistan. पवेलियन से कंटिन्यू कर रहे हैं फैलो गवाए। उनकी पहली गेंद जो कि निस्बतन शॉर्ट जरूर थी लेकिन लेफ्ट हैंड शकीब अल हसन के लिए विड्थ दस्तयाब नहीं थी जिस पर पुल करते और एक अच्छी पेसी डिलीवरी जिसको इन दी एंड वो बमुश्किल तमाम ऑन साइड पे खेलने में कामयाब रह सके। डॉट बॉल 79 for 2। बांग्लादेश एक शानदार ओपनिंग स्टैंड के बाद अब उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ एक स्लिप के साथ एक मरतबा फिर फैलो गवाए स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिसको ड्राइव किया वापस बॉलर की जानिब अपने फॉलो थ्रू पर फील्ड किया जिसको फैलो गवाए ने once again another dot ball 79 for 2। Both the bowlers in action at the moment, Philip Guayo and Chris Morris, have got a wicket each, and as such, they will say keep us on for a little more longer. Imran Tahir is itching to come at the bowling crease, and we'll see when he gets his turn. And at the moment, it's Shakib Al Hasan and Mushfiqur Rahim. Shakib this time turns it away. Use of the wrists, the ball goes down towards deep backward square leg. Here comes the throw as the batsmen settle for a single. Shakib goes to 7 and Bangladesh move on to 80 for 2.
having been put into bat. The run rate is 6.4. Credit should be given to the Bangladeshi batsman जिस अंदाज से खास तौर पर शोभा सरकार ने अपनी इनिंग्स को जारी रखा था, लेकिन एक अच्छी गेंद पर वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का भी शिकार हुए। मिथुन महमूदुल्लाह रियाज जो कि एक बड़े अच्छे फिनिशर हैं, खासतौर पर पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। मुसद्दिक हुसैन जो कि अच्छी फॉर्म में है इस आइलैंड के और वेस्ट इंडीज में के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से, एंड देन सम power hitters and all-rounders like Saifuddin and Mehdi Hasan Miraz का नाम आ गई। इस दौरान एक और शॉट बॉल जिसको बैकफुट पे जाकर मुशफिकुर रहीम ने ऑन साइड पर सिर्फ और सिर्फ हल्का पुश किया जहां पर फील्डर मौजूद थे। इसको हासिल करने के लिए पहुंचे डेविड मिलर, एक और रन का इजाफा, बांग्लादेश पहुंचा 81 तक के नुकसान। I think these two are the pair of the for Bangladesh because they are experienced, they are stroke makers, and they are very confident players. Where you have Mahmudullah to follow, as Atik was telling you, he can finish a match off. But at the moment, we don't need a match to be finished off. We need a very sizable total to be put on the board, and I'm sure Mahmudullah is quite capable of doing that as well. The next ball played out onto the offside, and there is one run. It's 82 for 2, Mushfiq 5 and Shakib 8. यस, अगर हम रन रेट पे देखें तो ऑलरेडी कुछ 6.4 की रन औसत है जो कि बांग्लादेश के लिहाज से बिल्कुल भी बुरी नहीं समझी जाएगी। तो इस वक्त यकीनन इस पार्टनरशिप के जरिए से जो कि बहुत ज्यादा अगर पावर हिटिंग नहीं भी करते और अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं और एक बाउंड्री या 2 ओवर में हासिल करते रहेंगे तो बिल्कुल ट्रैक पे रहेंगे 300 प्लस के टोटल के लिए। डाउन द लेग साइड ये गेंद जिसके निकाला ऑन साइड पर वहां पर फील्डर मौजूद, क्रिस मॉरिस इस तक पहुंचेंगे, 1 रन का इजाफा इस दौरान। 13 आउट्स के बाद बांग्लादेश 83 for 2 at the over। बैंक फला की किसी भी करंट अकाउंट के साथ मिले 600 से ज्यादा ब्रांचेस का वसीम नेटवर्क, हर कोने पर ATM, 24 आवर्स ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, अल्फा, ऑफिस और ढेरों फायदे। कौन है तुम? बैंक फला, द वे फॉरवर्ड। क्योंकि लेज है हमारा फेवरेट, ये लाया है हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा। अब मिले 15% एक्स्ट्रा 50 और 100 रुपए के पैक्स में। So share more this cricket season because life needs flavor. Serve Bank credit card for a million reasons. Bangladesh fixtures left. They're playing South Africa today, then New Zealand, England, Sri Lanka, West Indies, Australia, Afghanistan, India, and the last one against Pakistan at Lords on the 5th of July. In comes Chris Morris and bowls. This time Mushfiqur Rahim goes forward, plays it out, watches it onto the bat and drives it very gently. The ball travelling straight to mid-on, and there is no run. जी, इस मौके पर शायद ये एक दफा के डुप्लेसी के लिए यूं भी है कि दोनों खिलाड़ी जो कि इस वक्त फास्ट बॉलिंग का बड़े बेहतर अंदाज से मुकाबला कर रहे हैं। मुशफिकुर रहीम ने आते ही अपनी पहली 3 गेंदों के अंदर एक चौका हासिल किया और इसके साथ साथ ये दोनों जो कि लेफ्ट हैंड शकीब अल हसन मुशफिकुर रहीम है अपने निबल फुटेड समझे जाते हैं और स्पिन बॉलिंग का बड़ा अच्छा मुकाबला करते हैं, जिसके मेन से ऑब्वियसली इमरान ताहिर हैं जिन्होंने अब तक अपनी पहली गेंद नहीं की। अच्छी राइजिंग डिलीवरी स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप्स को कवर करके राइट हैंड मुशफिकुर रहीम ने इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। कुंडनी कॉक ने अपने दोनों हाथ निजाम पे बुलंद करके इसको कलेक्ट किया है ना, तो डॉट बॉल अच्छी बॉलिंग 83 for 2। You can judge the difference between the pace of Morris and Philip Weil. They are in the 80s, low 80s, up to about 85. And then, of course, there's Rabada, who is high 80s and into the 90s, as is Gidi. So those are the two fast medium. These are the two medium fast. In comes Chris Morris and bowls to Mushfiqur Rahim. Brought that one in, dug it into the right-hander. He covers up, plays back onto the offside. And a couple of fielders converge on it, hoping that Mushfiq would have moved out of his crease, which he hasn't. And there is no run. It's 83 for 2. मुशफिकुर रहीम ऑब्वियसली खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, खासतौर इन कंडीशंस का कि जिनमें उनको ये मिडिल पार्ट पे बैटिंग करने के लिए आना पड़े। साथ उनके मौजूद हैं बैटिंग के बेंच से शकीब अल हसन जिन्होंने 15 गेंदों पर 8 रन बना रखे हैं और बेहतर ये फॉर्म ये दोनों खासतौर पर मुशफिकुर रहीम कैरी कर रहे हैं आयरलैंड में खेली जाने वाली सीरीज से। एक स्टेप के साथ गेंद करने के लिए क्रिस मॉरिस ऑप्शन में बाहर गेंद जिसको कट किया है, एक चप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची जेन पॉल जमरी के पास जो कि पॉइंट की पोजीशन पे मौजूद, एयरबॉल होकर उन्होंने इस गेंद को हासिल किया।
और एक मुद्दा पे रन बनाने का मौका नहीं था। तो टफ कंडीशंस में जो कि डबलिन और मेलाहाइट में सीरीज खेली गई, वहां पर गुड 30s 150 और इसके अलावा भी कुछ अच्छे टोटल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के खिलाफ कार्डिफ में खेले जाने वाले वार्म अप में भी इन्होंने 90 रन की इनिंग्स खेली थी। ऑल इन ऑल अच्छे टच में मौजूद है Mushfiqur Rahim settles in, taps the bat in the block hole, waits for Morris, who's coming in now, up to the wicket and goes off the back foot, and that one's punched straight to Miller, who's fielding at deep backward point. Miller comes down, gets down on one knee, making assurance doubly sure, picks the ball up, throws it in.